या सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में ना हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मे बी 1 or 2 ड्राइंग्स आई विल टेक एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद दैट। आपको कुछ डाउट्स है या कोई चीज़ आपको अगर पूछना है यू कैन आस्क मी सो दैट आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। या सो आज के सेशन में ना एक फुटिंग का ड्राइंग है। ठीक है। एक कमर्शियल बिल्डिंग है। एक कमर्शियल बिल्डिंग का एक पूरा फुटिंग का ड्राइंग है यहाँ पे। तो टोटल फ्लोर कितने का, ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 फ्लोर का बिल्डिंग है। दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो ये सारे चीज आपके फुटिंग से, जैसे जस्ट 1 मिनट आई विल चेक इट आउट। या तो ये आपका F3 फुटिंग है, पूरा आपका F3 फुटिंग है। एंड इस F3 फुटिंग में ये आपका जो कॉलम है ना, इसके ऊपर C3 कॉलम आ रहा है। ठीक है। सो इन द सेम वे या ओके देखो, मुझे एक चीज बता देना कि मेरा वॉइस आप तक आ रहा है क्या? आर यू पीपल एबल टू हियर मी? या नमस्ते TRX रोहन पाटिल। So just tell me whether my voice is audible. So if it's audible मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। एंड अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको पूछना है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स so that I'll be there to help you out. Yes, okay, done. Yeah, voice is clear, then it's fine. Yeah, so I was discussing about this particular foundation. So this is ये आपका एक कमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है। एंड ये सर आपके अलग अलग फुटिंग्स है। लाइक ये आपका F3 फुटिंग है, ये आपका F2 फुटिंग है, फिर आपका F3 फुटिंग है। देन ये सारे फुटिंग का यहाँ पे साइज मेंशन किया गया है। जैसे ये फुटिंग का जो साइज है वो है आपका लगभग कितना, 3 3 6, तो इसे 6 फीट 9 इंच का है। और ये आपका लगभग 8 फीट का है। तो इस तरह से आपको पूरा एक फुटिंग का ड्राइंग दिया गया है। तो जब भी आप साइट पे काम करते हो ना, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग एंड डू इट। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको लिफ्ट पिट, क्योंकि ये थोड़ा थ्री स्टोरी का बिल्डिंग है। सिंस इट्स अ 3 स्टोरी का बिल्डिंग, डेफिनेटली तो आपको लिफ्ट का प्रोविजन भी देना पड़ेगा। सो यहाँ पे इन्होंने एक लिफ्ट पिट, तो जब भी आप लिफ्ट पिट प्रोवाइड करते हो ना, जैसे एक कॉलम इधर है, दूसरा कॉलम इधर है, तीसरा कॉलम इधर है, फिर एक कॉलम इधर, तो यहाँ पे जो हम फुटिंग प्रोवाइड करेंगे वो आपका काइंड ऑफ अ कंबाइंड फुटिंग रहेगा। कंबाइंड फुटिंग मतलब क्या होगा, बॉटम में भी आपका मेश आएगा, टॉप में भी मेश आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अलॉन्ग विद दैट उसी जो ड्राइंग है ना, उसके आपका पूरा कॉलम का लेआउट है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक 2 3 चीज यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि एक ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है। तो बस एक कॉलम का साइज आप एक बार याद रख लेना कि 9 बाई 12 इंच का कॉलम है, 9 बाई 12 और 9 बाई 18 इंच। सो कल हैज अ थंब रूल, अगर मान लो कोई बंदा आपके पास आ गया और उसको G+3 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, तो रफली यू कैन कंसिडर दिस कॉलम साइज एज अ काइंड ऑफ अ थंब रूल। मतलब 9 बाई 18, 9 बाई 21, 9 बाई 12 साइज का कॉलम आप अपने स्ट्रक्चर में प्रोवाइड कर सकते हो फॉर अ G+3 बिल्डिंग। ओके, ए थंब रूल ऐसा नहीं कि एक प्रिवेल करेगा, बट दिस आर द इनिशियल साइजेस व्हिच यू कैन चेक आउट इन ईटैब्स या स्टैट प्रो का मॉडल। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे उन्होंने पूरा कॉलम का रिइंफोर्समेंट दिया है कि सारे जगह पे देखो 16 डायमीटर का 8 नंबर का सरिया, और यहाँ पे भी इन्होंने 16 डायमीटर का 4 नंबर का सरिया और 12 डायमीटर का 4 नंबर का सरिया यहाँ पे दिया है। एंड यहाँ पे कुछ जगह पे 20 डायमीटर का 4 सरिया भी इन्होंने दिया है। सो अगेन अ काइंड ऑफ अ थंब रूल विच यू कैन टेल इज दैट हम यहाँ पे 16 और 20, 12 16 और 20 डायमीटर का सरिया हम यूज कर सकते हैं अपने कॉलम में। कभी भी याद रखना, कॉलम में मिनिमम आपको 12 डायमीटर का सरिया आपको यूज करना है। एंड कमिंग टू द लैटरल टाइस, ये आपके लैटरल टाइस होते हैं। तो यहाँ पे 2 लैटर मतलब 4 लेग स्टिरअप है, क्योंकि नॉट स्टिरअप, आई कैन कॉल इट एस लैटरल टाइस। तो यहाँ से यहाँ पे पूरा मिलके एक रिंग हो गया जिसमें 2 लेग रहेंगे, और यहाँ से यहाँ पे मिलके एक और रिंग हो गया। तो ये आपका 2 लेग, 2 इधर टोटल 4 लेग लैटरल टाइस होगा। ये आपका 8 mm का सरिया होना चाहिए। एंड आपका 9 इंच के स्पेसिंग पे आपको लगाना है। ठीक है। ये M25 है, यहाँ पे गलती से इन्होंने 250 लिखा है, 250 नहीं होते, M25 ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है। चलो, सो आई टेक अप फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट ने पूछा है। लेट मी टेक फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस so that let me see how I can answer. Yeah.
Sir, career in infrastructure or building. See, it's totally up to you in which field you want to make a career. I always did it in building only. So I would suggest building is better. That doesn't mean that your infrastructure is not good. Depends like what kind of field you are interested in. Okay. See, in building, the advantage is that suppose if you're working for a high-rise building, and let's say it's a 20, 25, 30-story building, definitely the construction will go for the next 3 to 4 years. So in the next 3 to 4 years, you will be in only one city where you can have a stable life also. And most of the high-rise construction happening in the metro cities like Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Pune, Ahmedabad, and all. So you get to enjoy the city life if you're working on a high-rise building constructions. And even in building also, what happens is lot of things you're going to do, interior, everything you're going to learn, getting my point. No? But if you go to the infra, let's say road construction, bridge construction and all, there any interiors and all, you will not do much compared to the building. The second problem is that there you will not be constructing the bridges and all in the cities and all. Mainly it is towards the village area, the outskirts part and all. And every time you have to keep on traveling from one place to other place. So that is one disadvantage in the infrastructure. But see, it's totally up to you. Whichever you like, you can continue. Not a problem. Okay, not a problem. It's up to you. Good evening, sir. As a diploma civil engineer, which field should be better for me? I'm willing to join QA/QC. It is QA/QC. See, for a diploma people and all QA/QC and all, it's not easy to get. First thing is that try to do a BTech. Don't go to college and do a BTech. There are certain colleges where you can just go and give the exams, and after 3 years you'll get a degree. So try to concentrate on that. Whatever knowledge you may have, most of the companies and all, they'll directly ask in the, let's say, if any vacancies comes, no, they'll write BTech, B guy, they'll write. So you are just a diploma guy. So definitely for those positions you cannot apply. And also in a good company, also for a QA/QC position and all, diploma they don't entertain. So first try to concentrate more on the, what is that, BTech part. Then you can go towards the QA/QC field if you're interested. Not a problem. Okay. So as a fresher, I don't want to be a site engineer. I want office work. Which skill I should do as a BTech fresher? See, if it is an office job, first you should know what kind of office job you're looking for. Whether you want to be a structural engineer, whether you want to be a quantity surveyor, whether you want to be a planning engineer, whether you want to be a billing engineer, whether you want to be a, what is that, uh, BIM, or you want to go towards a BIM. This is the first thing that you need to do. Apart from that, I always suggest start your career as a site engineer. The reason is that when you start your career as a site engineer, you get to learn lot of things. Okay. And for the first 1 year, forget about this work life balance and all those things. If you work for 10 12 hours also, you don't have to worry, because you are hardly 20 to 23 years of age. You don't have any family. I mean, when I say you don't have a family, you don't have a wife or kids and all, so that even if you come at 10 o'clock in the night or 11 o'clock in the night, nobody will be waiting for you. Okay. So what I would say, when you work for 1 year as a site engineer, you get to learn a lot of things. Once you learn it, then you see which field you want to go. If you want to go to QS, go for QS. Billing, go for billing. Planning, go for planning. BIM, go for BIM. Structural design engineer, if you want, then you should go for MTech, because with BTech, very few companies will entertain you. With MTech, doing it from a good college like NIT, IITs, and good private or government college, you'll get good placement of 7 lakh, 8 lakh, where you can have a better life after 2 years of your MTech. Okay. That again, when you start to work on site, no, there are a lot of challenges which you'll face. There are many ideas which will come in your mind. See, what this BIM and all we do. In BIM, what we do? See, in BIM, we are actually solving the problem of a site engineer, the coordination and all. No? So when you start to work on the site, you identify what is the actual problem. So once you understand what is the actual problem, you can develop a solution to that. Like for example, BIM is one solution where people have developed it. Apart from that, today a lot of project management softwares, everything people are developing with AI and all. But there should be one strong pain point. So the pain point, how you will understand, as long as if you don't work on the site, you'll never understand the pain of a site engineers, the project managers and all. No, so always work on the site. This is my what do you call this opinion, not opinion. This is my advice to you. Okay, yeah. Sir, structure engineer कितना charge करते हैं पर? See, structure engineers usually depends how they charge. Few people in the market are charging two rupees, few are charging 3 rupees,
There are few good people charging 4, 5, 6 rupees per square feet because there's a competition. No? What happens if somebody is doing the work for 3 rupees? You will tell no, no, I'll do it for 2 rupees and give. So we don't have any union. So, but you can charge anything in the range of let's say 3 to 5 rupees per square feet. Okay, yeah, sir. 4 to 5 years billing engineer next. 4 to 5 years billing engineer next. See, after billing engineer, what you can do, you can learn more towards the contracts, tender, all those things you can learn, and that way you can go forward. Even you can learn this thing. What is that? Planning also, project planning, MSP and all. So that way you can move further after 4 to 5 years of a billing engineer experience. Learn tenders, learn contracts and all. So that is the next step which you need to concentrate. So what is the maximum salary get for civil engineers after getting experience? There is nothing like maximum. No, it all depends on what is your ability. My elder brother is having around 30 years of experience. He is a project manager in a company. He earns 6 lakh rupees per month, but his age is 50 now. Okay. So there are many people in the industry. There are other. Well, this is one side of the picture. On the other side, I have seen people with 20, 25 years of experience still not able to get 1 lakh rupees per month. There are people earning 4, 5, 6 lakh rupees in the industry. On the other side, there are people with the same experience not even able to gain achieve 1 lakh rupees per month, right? It all depends. There's nothing like maximum and all. It all depends on how. But if you ask me at a fresher level, if you, at a fresher level, you usually start at 20 to 25,000 rupees ka salary. There are few companies who will pay you like 15,000 also, but on average, what happens is if you're working for a good company and all, and if you're a BTech holder, you can expect a salary of 20 to 25,000 as a fresher. After 2 to 3 years of experience, if you're applying for a good companies, if your exposure is good, you can expect a salary anything in the range of let's say 35 to 50 is what you can expect. But again, when I say you can expect, you should have that level of knowledge. You should be in a position to handle the complete projects, do a bit about planning and all. You're getting my point, no? Only then you'll be able to reach this kind of salaries. See, I think one of my student, I'll share my screen. Okay, just 1 minute. I'll share my screen. See, these are my students. Okay, those are enrolled in my courses, and these are students who are working in few of the companies. See, he's a fresher. He got a package of. Is my screen visible? Let me know. My screen is visible. Screen visible नहीं है. Okay, just 1 minute. I'll again wait. Just 1 minute. I am again sharing my screen. Yeah. Okay, now it's visible. No, great. Yeah. See here, he's one of a fresher student. Okay, who got a 4.2 lakh a package. Got it. And I'll tell you one more student. He's one of my student who got a 7 lakh package. He has hardly 6 months of experience. And this guy, of course, he had taken my course, but it's not because of my course. He was working in a he was doing a BTech in a good NIT, and he was good at studies. He had a good CGPA. There was a company called BPCL which came to the placement. They offered him 20 lakh rupees ka package. So 20 lakh rupees is 1.5 lakh rupees per month. But again, nobody gets that salary. Very few lucky people will get this. Since he was very good at studies, the college was good at NIT. So that is the reason he got it. But in civil, it's not easy to get such kind of placement. Okay, but yeah, this the kind of package like 7 lakh, 4.2 lakh in the initial stage you can get. Okay, and he was another one of my student who got a package of around 4 lakh rupees as a what is that quantity estimator. Got it? So in this way, there are many students who have got a job and all. So I'm just showing you. So these are the things which is achievable, but of course you require a lot of what is that practice and all those things. Yeah. uh, got it, sir. What is the maximum salary is done? Career in infrastructure or building in terms of pay, I don't have idea. I mean, it all depends on the company here. Infra have got their own problems, especially in the infrastructure. A lot of small companies are also there. You know this L1 bidder and all, lowest L1 bidder and all. So anyone who has money will come into construction, take up the project and all. Then they don't pay salary on time and all.
But in real estate, when I say building is all about real estate projects. These companies like Godrej, DLF, Lodha, and in Bangalore we have this Satwa, then we have Brigade. All these are the good companies. They are focusing only on real estate, so they pay on time, and all those companies, you get good salary also. I didn't work much on the infra part, so I'm not the right person to guide you exactly on the infra part. Okay, got it, sir. I know what, so what I need to focus to get a job as a diploma holder also, I'm studying. So I can say, when you say about the skills, it's all about, you should know site execution, drawing, reading, estimation, BPS, BOQ preparation, a bit about rate analysis. If you know these things in the initial days of your career, you can go and work on the construction site. After, let's say, 1 year and all, you can learn QA/QC, learn project planning. That way you have to keep on upgrading. See, again, all these things I explain in my courses. I always suggest you people. Again, today also we have this 20% off on my courses. Download my Civil Brains app. There's a course by name Construction Manager Mastery. I explained all these things in a more better way. You spend some money, whatever money you're spending in my courses, that will give you 10x return. You don't have to worry about the outcome of the course. Enroll in that, learn it, and then you can apply for a better position. And whatever reviews I'm showing, these are the people who enroll in the courses and all. Okay, yeah. No, currently I'm more into teaching. See, I used to work in 2015-16 for 1 year. I worked. After that, I worked as assistant professor for 3 years. For the past 5 years, I've been I've been going as a kind of what you call site inspection in my hometown. Along with that, I teach you people online, and so I don't work for any companies nowadays. A few of my friends take up the projects. I go there for a checking and all those things. I go, but full time I'm into teaching nowadays. सर आज एडवर्टाइजमेंट हाँ वो एडवर्टाइजमेंट ऑफ कर दिया मैंने, उसको ना वो मोनेटाइजेशन वाला ऑफ मैंने ऑफ कर दिया. Sir, I left my job after 1.5 years as a site engineer. Now I'm confused what to do further. Please give suggestions. See, I cannot directly give you a suggestion. I want to know your history. When did you finish your BTech? 1.5 years. What kind of work you did, and why you left? How long? How long you have been not working? I want to know all those information. Only based on that I can give you further suggestion. Okay, see, this is my WhatsApp number. I'll put it in the comment box: 8095128107. You can WhatsApp me and just tell me whenever I am free. I'll reply you there. Sir, I am 26. I wasted 3 years preparing government job. Now I'm doing a job with a salary of 15K. No idea what to do. See, when you're preparing for the government job, you should not tell that you wasted. There's nothing like waste and all. Okay, in 3 years, if you are given 100%, if you have actually studied everything, then to not today, I mean, suddenly that government job preparation will not may not help you, but anywhere in your life it is going to help you. You might have studied general studies, politics and all, polity and all. So in your life, anywhere in your life, it will help you. So preparing for the government job is not a waste. Okay, now coming to the salary point of view. See, if you're working for a small firm and all those things, definitely people will pay you 15K only. Okay. So next, first again, that's what I want to know: where you're working, what kind of companies you're working. I want to know. After that, I would suggest go for a certain office job. Let's say quantity surveying, planning, and all. Even if you're interested, you can go towards the BIM jobs and all. Okay. These are the options that you have, where you can expect at least 20-25,000 of salary, work for 1 year, and later you can go towards 30, 35, 40,000 salary. So based on your idea, I can suggest the courses which you want. Okay, done. Anirudh Batam, sir, for MTech structure engineer, career is good for long career. See, I'll tell you a few things. Career is good. All those things depend on you. Okay. There are people only with BTech, they have done it very good. There are people after doing MTech also, they are not doing good. You're getting my point, no? So it has nothing to do with all these things. It all depends on what is your interest, what is your vision, what you're looking for. That is important. So if you are someone who is very passionate about engineering, who likes physics, mathematics, strength of materials, RCC subjects and all, and if you're passionate about designing the subjects, then go for structure engineering. Definitely there is scope. Suppose if you're someone who doesn't have interest in physics, mathematics, who doesn't like strength of materials, who doesn't like RCC, now if I tell you to do and go and do MTech in structures, do you think you'll make a career in that? When you don't have interest only, what career you're going to make?
You getting my point? No? So based on your interest, you do it. Okay. Sir, suggest some course to do Excel in designing. See, for doing Excel in designing, you WhatsApp me. I'll suggest to. I have one of my mentor. Sir has prepared a very good course on Excel. But again, why you want to learn, that is the question. Because if you go for any companies, they will have their own Excel sheet. So you don't have to create from the scratch. And if you want Excel sheet, you can take someone's Excel sheet and do it, especially for structure designing. But if you want to learn it, no problem. I have given my number. Just WhatsApp me there. I'll suggest you my mentor's number. He has a course on Excel based on the designing. You can enroll and learn it. Okay. Okay. Or we should do other things. What is the question about? Or we should do other things? I don't know. TPA. Sir, give your comment. Commercial, big, residential, industrial, infra. See, infra and all, I don't have much idea. I'll tell you. See, residential and commercials both are good. In residential, what happens nowadays? Most of the high-rise building and all comes under a residential. Commercial is also good. Commercial building is also good. You get to learn about flat slab construction and all those things in the commercial building. In case of industrial building, what happens? It's a fast project. Industrial building is not like 3 year project and all. 1.5 year, max to max 2 year, you'll finish the project. In industrial, the advantage is that you learn even the steel structure, the PB part, pre-engineered buildings. You're going to learn everything. You learn in the industrial buildings and all. But when it comes to the residential building and all, it's only about a RCC. We don't do PB and all in the residential. Getting my point? No. Residential will take 3 to 4 years for the finish. If it is like, let's say 20, 25, 30, 40 floor building. Industrial and all within 1 year, 1.5, 2 year you do. So that is how it is. So everything is good from experience point of view. Everything is good because in industry you get industrial projects. You get to learn about steel structure, PEB and all. High rise building, if you are doing in a good company, you get to learn this alu form, that is my one and all. So my one you'll not learn in industrial projects and all. In commercial and all, you learn about this post tension slab, then flat slab construction and all. So this post tension and flat slab usually in the industrial building you'll not find it. You getting my point? No. So everything is good. Right? Depends how is your exposure and all. हाँ. So I recently joined one company जिसमें estimation, tender management, PPS, billing ये सब काम होता है. But I have zero site knowledge. That's why I sometimes get got confused. So simple कुछ नहीं करना है. Civil Brains का ऐप डाउनलोड करिए. से जो मैं बोलूंगा ना, यू फॉलो दैट. मतलब ब्लाइंडली कोर्स में एनरोल मत करना, मैं खुद बोलूंगा. बट आई वुड सजेस्ट, अगर इतना ही प्रॉब्लम है, डेफिनेटली कोर्स में एनरोल करो. आप जितना टाइम खुद से सीखने में लगाओगे या जितने टाइम आप ऐसे रैंडम यूट्यूब चैनल में देख के टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा आप मेरे कोर्स में एनरोल करिए. नॉट अ प्रॉब्लम. दैट विल गिव अ 10x रिटर्न. तो आपके आपके अगर प्रॉब्लम है कि आपको बीबीएस करने में प्रॉब्लम है, ड्राइंग पढ़ने में प्रॉब्लम है, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो मेरे पास जस्ट कमेंट करिए ना, मेरा माय स्क्रीन इज विजिबल. जस्ट कमेंट वेदर माय स्क्रीन इज विजिबल. आई एम जस्ट शेयरिंग अगेन. आई विल शेयर इट. The screen is visible. No, okay, I stopped it. Now I'm sharing it. See, I would suggest everyone, if you have money and if you are interested to learn in a better way, this is a course which I'll suggest about the construction manager mastery course. Is everything covered? Whatever questions you people are asking, whatever doubts you have, everything I've covered it in this particular course. It is available in Hindi and English language. आप हिंदी लैंग्वेज के ऊपर करिए, नो प्रॉब्लम. इसमें लेवल 1 में मैं पूरा आपको साइट एग्जीक्यूशन, आप अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जाके सीखने जाओगे ना, वो लोग आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे जितना मैंने आपको ऑनलाइन में पढ़ा के रखा है. पूरा साइट एग्जीक्यूशन यहाँ से समझ में आ जाएगा. ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, अगेन उसमें मैंने सारे टाइप्स के ड्राइंग्स को लिया है. छोटे मोटे स्ट्रक्चर को भी लिया है, बड़े स्ट्रक्चर को भी लिया है. एयरपोर्ट के ड्राइंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग का ड्राइंग है. इन पूरे ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, इन्वर्टेड बीम क्या है, हर एक चीज मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में कवर करके दिया है. एक बार ये होने के बाद नेक्स्ट आप मेरे एस्टिमेशन वाले कोर्स में आ जाना. इसमें आपको एस्टिमेशन करना, मटेरियल कैलकुलेशन, बीओक्यू कैलकुलेशन, बीबीएस. आपने अभी आपका बीबीएस का प्रॉब्लम है ना, ये लो पूरा बीबीएस मैंने आपको हर एक बिल्डिंग का स्टार्टिंग से एंड तक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड. अगर आप इसको एक बार कर लोगे, then maximum things will be covered from this particular course. Along with that, आपको QA/QC में जाना है तो मेरा QA/QC का लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. एवरीथिंग रिगार्डिंग द QA/QC आई हैव कवर्ड इट हियर. फिर इन फ्यूचर 2-3 महीने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ आ जाएगा. हाई राइज बिल्डिंग अभी मैं बता रहा हूँ ना, हाई राइज बिल्डिंग और माइवान का भी आ जाएगा. अभी आपने कमर्शियल बिल्डिंग्स बता, तो फ्लैट स्लैब का 5 वीडियो है.
अगले दिसंबर के एंड तक और भी सारे इसमें वीडियोस में ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से जो जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं ना, एवरीथिंग मैंने अपने कोर्स में कवर करके रखा, बिकॉज आई नो कि एक इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट, उसमें 20% का ऑफ चल रहा है, आप आज भी खरीद सकते हो कोर्स को, नो प्रॉब्लम। एंड आई टेल यू, आप इस कोर्स में अगर इन्वेस्ट करोगे ना, इट विल गिव यू 10x का रिटर्न। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग। मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट्स का पता नहीं, बट इन माई कोर्सेज डेफिनेटली आपको उतना वैल्यू तो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ऑल द रिव्यूज मैंने आपको दिखाया हुआ है। एंड ऑल्सो उस कोर्स में लगभग 500 लोगों ने एनरोलमेंट किया है। ठीक है, हाँ, फाइन। तो तुषार रेरा, यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। चेक आउट माई कोर्स वंस। आई एम नॉट टेलिंग कि डायरेक्टली एनरोल मत करो, एक बार कंटेंट चेक करो। इफ इट इज satisfying your requirement, definitely enroll it. Okay, where is the question? Okay, okay, many questions has come. ठीक है, कहाँ पे गया? एक, ओके, 3 years सर फॉर एमटेक हो गया, सजेस्ट सम कोर्स टू एक्सेल हो गया, ये फाइन है। व्हाट शुड आई डू टू कंटिन्यू विद कंपनी और जॉइन साइड जॉब? नो, अगेन डोंट जॉइन साइड जॉब फॉर बेसिक एंड ऑल. If you finish my course, that is better than getting 2 to 3 years of experience on the side. Enroll in my course and continue in your job, because in your job you're getting to learn lot of things, like estimation मिल रहा है, टेंडर मिल रहा है, बीबीएस। लोग इसको करने के लिए 2-2 साल साइड जॉब छोड़ के उसमें जाते हैं। आपके आपके केस में ऑलरेडी यू गॉट टू लर्न बीबीएस बिलिंग एंड ऑल। प्रॉब्लम है ना, समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मेरे कोर्स में एनरोल करो। मैं हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली साइड से देखो इस लेवल पे पढ़ाता हूँ। अगेन आई ऑलवेज टेल इन माई वीडियोज, जिस लेवल पे मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, आपके मैं ऑनलाइन इस लेवल पे पढ़ाने वाले हैं। ये देखो, हर एक चीज, और ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स को हम कवर करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन माई ऑनलाइन कोर्स। आपको ऑफलाइन ऐसे वाले बहुत ही कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ऐसे वाले ऑफलाइन ट्रेनिंग में लेके जाए, क्योंकि परमिशन इतना आसानी से मिलता नहीं है। सो आई नो ऑल दैट पेन एंड ऑल, सो इसीलिए व्हाट आई हैव डन इज, मैंने आपको ये सारी चीजें ऑनलाइन में करके दिया है। एवरीथिंग, सब के सब जो आप यहाँ पे इमेजेस देख रहे हो, हर एक चीज हम इतने बड़े बड़े साइट्स का, ये पूरा एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है। तो जब मैं इस तरह से आपको पूरा ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, देखो ये सारे प्रोजेक्ट्स है, ये सारे, ये एक और 2 बेसमेंट वाला बिल्डिंग है। तो सब कुछ मैं आपको अपने कोर्स में इस तरह से हर एक चीज, ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, साइट पे एग्जीक्यूशन कैसे होता है, स्टार्टर फिल्म क्या होता है, अगर आप इसको पूरा ढंग से कर लोगे ना, फिर आप कोई भी साइट जाके हैंडल कर सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं साइट में जाके सीखूंगा ना, कोई भी साइट तो मैं 1 महीने 2 महीने में आपको सीखने वाला हूँ। पूरा बिल्डिंग खत्म होने के लिए आपको 1-1 1.5 साल लगेगा ना। तो मैंने 1.5-2 साल का पूरा मेहनत करके कोर्स में डाल दिया, तो फिर आपको क्यों फिर 1.5 साल वेस्ट करना है? आप मुझे 3 से 4 महीने का टाइम दे दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा। मान लो आपने सीख भी लिया, आप सिर्फ बिल्डिंग का कन्वेंशनल शटरिंग सीख लोगे, कल तुम्हें फ्लैट स्लैब हैंडल करना होगा, कल आपको माइवान हैंडल करना होगा, वो सब फिर कहाँ से सीखो? एक ही साइट में आपको माइवान भी मिलेगा, फ्लैट स्लैब भी मिलेगा, हाई राइज भी मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। तो मैंने सब कुछ अपने कोर्स में कवर करके रखा है। ट्राई चेक आउट द कंटेंट एंड डेफिनेटली एनरोल करिए। ठीक है, फाइन सर, मैंने डिप्लोमा करा है, मेरी सैलरी 15K और मुझे 6 मंथ हो गए हैं ज्वाइन करें कंपनी में। अब अपनी सैलरी इंक्रीमेंट कब हो सकती है? सी, यूजुअली इंक्रीमेंट कब होता है? साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है। कुछ ऐसे कंपनी जो 8-8 महीने में भी करते हैं, देयर आर वेरी फ्यू कंपनी, यूजुअली द इंक्रीमेंट हैपेंस वंस इन अ ईयर। ठीक है, तो क्या करना है, 1 साल कंप्लीट करो एंड सी इफ यू हैव अ गुड ग्रोथ इन दैट कंपनी, तो आगे कंटिन्यू करो। अगर उसमें आपको लग रहा है कि अच्छा ग्रोथ नहीं, तो कंपनी चेंज करो। अगेन आपका डिप्लोमा है, तो डेफिनेटली क्या करना है, बीटेक कर लो। ठीक है, दैट्स इट, जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। ओके, ओके, ठीक है ना सर? आई एम completed बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इन 20, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट टू डू? See, if you have done it from computer science, if you're not interested, try to see something where you're interested, in which field you're interested. Based on that, you do. Civil, I will not suggest you. When I say I will not suggest you, first of all, you don't have a degree in civil engineering. And in civil engineering, it's not easy initially. You start your career with 15K, 20, 22. You have to work on the site for 10, 12, 13 hours. Only then you're going to go to a better position after 3 to 4 years of experience. Okay, so whichever field you're interested, you can get into that. Fine. Okay, huh. Fine, next, what is the question? Okay, Pravina G, I'm presently working in RMC. I want to work planning engineer. I have purchased your MS project course. What next I have to do for professional in planning? See, if you're working in RMC plant, I want to know, why did you buy my planning engineer course, that is MS project? Because I always suggest
planning engineer, if you want to become, first you should have a site knowledge. You should know how to prepare the drawing. You should know how to read the drawing. You should know to prepare BBS, BOQ, and all. If you know all these things, only then you should take a MS project or a Primavera course. So if you don't have a site exposure and all, definitely doing only MSP course is not going to help you, and nobody will give you a planning job. So just WhatsApp me. My number is 8095128107. Let me know what is the intention behind taking directly MSP course, and I want to know what is the experience you have in RMC. Based on that, I can guide you. So you people, if you run behind the software thinking that by learning some, see, in my course I teach you both software and concept, but again they want some site experience, site knowledge, and all. So that is why I'm asking you. Okay, I want to do civil engineering job. What to do? See, with computer science degree and all, you cannot do a civil engineering job and all. Nobody will entertain you. Okay, it's not possible here. I mean, only thing is, if you have some family business, you can run a family business. But if you want to come and work in a civil field, at least a diploma or a BTech degree is needed. Sir, what is your take on doing QS and contract management in NICMAR scope and future? Again, when it comes to scope and future is there in all the field. Depends on your interest. NICMAR is good. If you're someone, see this QS and contract management, it's a 1 year course or a 2 year course. I think it's a 1 year course on MBA. It is good. You can do it. See what is their placement record and how many people have done it. Go to LinkedIn and see people those who have done that course. Connect to those people. Ask them about their review. How is the course? How is the placement scenario and all? And if they are saying that placement is good, you're getting 7 lakh, 8 lakh a package, definitely go for it. Not a problem. But only the thing is, don't fall for their placement record of NICMAR. Just connect to the people and speak. If they're giving you positive reviews, then definitely it's a good program you can do. I didn't watch Prison Break. Process of becoming contractor, in which sector have more money, building road, bridge, and contractor? See, for a contractor, it's all about making money. Okay, it doesn't matter which field he is going to do. You can make money in whichever field you want. Sir, can you come up with the interior design course, either you or other person on your platform? Interior, maybe after 3 4 months, there is one interior project going on in my place. I can make a videos of that, and like I have done a site engineer course. No, same thing. I'll teach you how the interior works are to be done. That I can do, but interior designing teaching I don't do. There are other person who are architects and all. I can they have a course. Otherwise, let me, I have one of my relative who is an interior designer. I'll ask him whether he can make a course and give me, so that I can do. But again, maybe after 2 to 3 months. Currently I'm working on this high rise building site execution interview preparation course and all. I will make it perfect once. After that, I'll go to the other domain. How to buy it? You download my Civil Brains app from Play Store. If you're using an Apple, download Class Plus app, use org code YFQXV. This is a course by name Construction Manager Mastery. Make a payment, enroll in that, and give me 3 to 4 months of your time. And after 4 months, you see what is the changes that is going to happen in your thinking and in your level of understanding the concept. That's it. Simple. Sir, how to prepare for campus placement? See, for the campus placement, they will not ask you much about industry oriented questions. They'll basically test what is a, how strong is the fundamental. They'll ask you questions about, let's say, concrete technology, strength of materials, structure analysis, then a bit about surveying, then bit about geotechnica. These are the questions that you or an RCC question, steel questions they'll ask you. Whatever you studied in engineering, no, those questions they are going to ask you. Get all those things good, get your fundamentals good. So if you're good in that, and they'll again, you have to be good in aptitude also, because if you clear the aptitude only, you can go for a technical round. So focus on that. That's it. Enough. Okay, sir, I'm fresher, no site experience. What to do as a site engineer? Nothing. Again, simple. I'll straightforward. I'll give you a very simple way. Download Civil Brains app. I have a course by name Construction Manager Mastery. Enroll in that. Give me 3 to 4 months of time. I'll make you a site engineer where you can go and compete with 2 to 3 years of experience people. Simple. Nothing else. This is, you follow this, blindly follow this. Definitely, I'll make you reach to that level. Otherwise, download my Civil Brains app. I've given a free course. Check out my free course once. See how I teach. See how much you're able to understand. If you feel I'm the right person to teach you, definitely enroll in the course. I completed BTech in computer science, but not interested in coding. So I do civil engineering job. What to do? Now you do civil engineering job. What to do means I didn't get your question. If you're already doing a civil engineering job, if you want to upgrade your knowledge, enroll in my course. But because without a BTech in civil engineering, I don't know which company is offering your job. So I want to know that.
So I completed my BTech in 2022 and 2023 I got a job in JJM project. Okay, I worked there for 1.5. They said this work is complete. You have to leave now. I'm looking for a job. Suggest. So that's what. Yeah. See, if you're looking for a job, I think tomorrow, day after tomorrow, I'll bring one video on my YouTube channel, how to get a job as a fresher and how to apply. Watch that video. There I've explained you. Apart from that, I have given you my number 8095128110. WhatsApp me, WhatsApp me, and I'll be there to help you out. Okay, fine. Because in one line I cannot answer it. So okay. हाँ, सैलरी इंक्रीमेंट कहाँ पे ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेट और साइट? See, it all depends which company you're working and all those things. Sir, I already worked in site work also. What was the question? Pravina ji. Okay. You had asked some question. No? What was your earlier question? Pravina ji. Okay. हाँ. You worked in site, no? Fine, fine. Then you took my MSP wala course, no? Fine. So what is your question then? So what was your question after that, Pravina ji? So what do you prefer planning? So you WhatsApp me. You WhatsApp me. I'll tell you. Okay. What you want to do, I'll tell you. Yeah, fine. सैलरी इंक्रीमेंट कहाँ पे ज़्यादा होगा, दैट इज फायर. हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट, आई एक्सप्लेन यू. ओके, सैलरी इंक्रीमेंट कहाँ पे ज़्यादा होगा, कॉर्पोरेट. सर साइड का कुछ ऐसा है, सुबह 8 बजे जाते हैं तो कब वापस रूम आना है तो कोई आइडिया नहीं होता है, बाकी मज़ा आ रहा है. सी, दैट इज करेक्ट, क्योंकि साइट ऐसे ही चलता है. दैट इज वन प्रॉब्लम विद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. किसी ना किसी को तो चेंज करना है, पता नहीं कौन चेंज करेंगे. दूसरी चीज़, आई एम ऑफ ओपिनियन दैट 22 साल 23 साल के एज में तुम रात के 8 बजे को भी आओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रात के 12 बजे को भी आओगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. बिकॉज हाँ, अनलेस अनलेस अगर आप घर के पास ही साइट पे काम करें तो इट्स अ प्रॉब्लम. बट अगर आप रूम में रह रहे हो देन यू आर नॉट कंसर्न द आउटसाइड वर्ल्ड. what I would suggest is instead of complaining, what I would suggest is 1-2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करो, सारे चीज सीख लो, एंड 2 साल के बाद ट्राई टू अप्लाई फॉर बेटर कंपनीज एंड फॉर ऑफिस जॉब. जो भी मेहनत आपने 2 साल यहाँ पे किया, रात के 11 12 1 बजे तक जो भी आपने मेहनत किया ना, इट विल गिव यू फ्रूट आफ्टर 2 ईयर. ठीक है, पर वो मेहनत आपको करना पड़ेगा. आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस साइट वाला कंडीशन. पर क्या करे, इतना एक्सप्लॉयटेशन सारे कंपनी करते हैं कि सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 11 बजे काम कराते हैं. दे विल मेक यू टू वर्क इवन हाफ डे ऑन संडे, एंड कोई ओवर टाइम भी नहीं देते हैं. सो अगेन ऑल दिस अदर thing why people are not going towards the civil engineering construction line and all. But somebody who's already doing that, I would always suggest 1-2 साल मेहनत करो, क्योंकि तुम 8 बजे आओगे तब भी तुम रील्स या व्हाट्सएप देख के तुम कुछ करोगे. इससे जो तुम 12 बजे आओगे, और 4 साल अगर तुम अच्छे से साइड पे कुछ मेहनत करो, कुछ नया चीज सीख लो, 2 साल के बाद यू विल गो टू बेटर पोजिशन. तो आप 2 साल के बाद का विजन ले लो. कल क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या हुआ, डोंट थिंक अबाउट इट. आज का मेहनत आप 2 साल के बाद थिंक करो कि वेयर इट विल टेक मी. सो कीपिंग दैट इन माइंड यू लर्न इट. ओके, डन, फाइन. सर सैलरी इंक्रीमेंट कहाँ पे ज़्यादा होगा, कॉर्पोरेट और साइट? अरे मैंने बोल दिया ना, वो डिपेंड करेगा ना कहाँ पे काम करोगे. देखो कुछ ऐसे साइट इंजीनियर्स है जो 25,000 30,000 35 भी ले रहे. कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में बैठ के 15-20 हज़ार भी कमा रहे हैं ना. सो डिपेंड करेगा कौन से कंपनी में कर रहे हो, क्या प्रोफाइल में काम कर रहे हो. दैट इट विल डिपेंड ऑन दैट. फाइन. See, when you're going for an interview, playlist is of no use. Because when you're going for which interview you're going, if you're going for off campus interview, definitely आपको पूरा you should know entire site execution, estimation, drawing, reading, BBS, BOQ, these things, just by preparing some interview questions. If you go, definitely they'll ask you 3-4 questions from the construction side, you'll not be able to understand. So you have to learn the entire sequence of construction, drawing, reading, BBS, BOQ. Only then you can compete with other people. Just by learning some questions like what is the grade of concrete, what is M25 grade and all, they'll not ask you such questions there. Okay, they'll ask you few questions related to the construction site about productivity and all. So there is no point in just watching some interview question ka playlist. From my YouTube, I think, see, most of the people are having 0 to 5 year of experience.
I have students from 18 to 22 years. Around 40% students are from 18 to 22 years, and 25 to 32 years of age. Around there are 40-50%. So most of my students are a mix of 18 to 30-35 years of age. Site experience is used in design. It will help you to optimize the design. One option. It will also help you with understanding what the structure, what the site engineers face the difficulty, and being a structure engineer, how you can optimize it, how you can make it better. So that way, site engineer experience will help you. For example, let's say I've designed a beam. The width of the beam is, let's say, 230 mm. Based on my designing, I can, as a structure design engineer, let's say I'll provide a 20 diameter 3 bar. I'll provide 20 diameter 3 bar in a 230 mm beam. Let's say I'm giving an example. You can provide on the paper, you can provide, and design also is correct. But on the site, for a 230 mm width, 20 diameter 3 bar, definitely your concrete will not pass through that. Getting my point? No. On paper, you can do anything, but execution people will face the difficulty. Now, if you have worked on the site, you know that pain. So since you know the pain, while doing a detailing, what you will do, instead of 20 diameter 3 bar, what you will do is you can go with 25 diameter 2 bar. So you know now what will happen. You're getting my point? No. So this way your site knowledge will help you for a structural design engineer ka job. Yeah. Okay. Site experience fine. Sir, first year BTech students main aim to crack government exam. Suggestion. First year main aim to crack government exam, then you focus more about the general studies subjects and all, because in first year there is no civil engineering subjects as such. So then focus more on aptitude and general studies. And when you come towards second year, third year, and final year, then you focus on your engineering subjects. So that way you make a practice, and definitely once you are in final year or once you are in out of the college, if you are able to clear any government exam, that will help you a lot. नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा स्टेट पे आप देखो यार, मेरे को कोई कंपनी पता नहीं, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाके देखो ना त्रिपुरा में कितने सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। गूगल में सर्च करो, लिंक्डइन में लोगों को कनेक्ट करो, तो इस तरह से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। सर, शुड आई ड्रॉप माई CV ऑन योर WhatsApp? I mean, you drop it. It's of no use dropping any CV to me, because I am not offering any jobs to anyone. I'll offer knowledge. For jobs, you have to connect with the right people on the LinkedIn and Naukri and other people. Okay, you're getting my point? You drop it, I'll see if any changes are to be done in your resume. I'll help you in making those changes, but don't expect any job from me. But I can add you in a WhatsApp group of mine, where sometimes I keep on posting about the job vacancies and all. So yeah, that may help you. Okay. साइट इंजीनियर को ओवर टाइम क्यों नहीं देते हैं? अब पता नहीं क्यों नहीं देते, बिकॉज से होता क्या, आप एक आदत, स्टार्टिंग से लोगों ने एक आदत डाला है कि किसी ने पूछा नहीं, तो क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, किसी ने दिया नहीं। बट जिस कंपनी मैंने काम किया था, वो कंपनी का नाम था SMC, वो जापानीज कंपनी है, तो हमको ओवर टाइम मिलता था 6:30 के बाद, हर 1 घंटे के लिए। आई यूज टू गेट 50 रुपये पर मंथ 2015 में। आई थिंक 100-150 रुपये मिल रहा होगा आपके टाइम पे। वो आई थिंक इंडिया में कुछ जापानीज कंपनी है जो आपको ओवर टाइम प्रोवाइड करते हैं। बाकी LNT से लेके सारे सारे कंपनी, नोबडी विल पे यू ओवर टाइम। अब पता नहीं क्यों ओवर टाइम नहीं दिया जाता है। एक्चुअली दे शुड गिव। सही है ना, क्योंकि आप दोगे तभी तो लोगों को काम करने के लिए भी मन लगेगा। अब पता नहीं प्रॉब्लम क्या है ना, वो 50-60 साल से ऐसे ही चल के आ रहे हैं, ना किसी ने पूछा ना कोई देने गया, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। पर आज के जो आप लोग है ना, जेंजी लोग, तो आप लोग इसको आगे जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है। सर, आई वांट टू स्टडी लोड कैलकुलेशन, देन साइट का काम नहीं सीख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आई वांट टू स्टडी लोड कैलकुलेशन। अरे मेरे कोर्स एनरोल करो यार, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। लोड कैलकुलेशन क्या होता है बताओ? स्लैब का लोड निकालना है, तो स्लैब का लोड कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बीम के बाद, एक बीम के ऊपर। तो स्लैब कैसे ट्रांसफर करेगा? वो आपका ट्राइंगुलर एंड ट्रेपेजोइडल डिस्ट्रीब्यूशन करके है। तो ट्राइंगुलर का फॉर्मूला है हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। जितना लोड आएगा, हाफ ऑफ द लोड आपके बीम, वो लोड आपका बीम के ऊपर जाएगा। 50 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो बीम इस एंड कॉलम और इस एंड कॉलम पे जाएगा। तो 50 को डिवाइड बाई 2 करना है, तो 25, तो 25 इस कॉलम के ऊपर जाएगा, 25 इस कॉलम के ऊपर जाएगा। इसमें और क्या है लोड कैलकुलेशन सीखने के लिए? बाकी लाइव लोड, डेड लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 आपको रेफर करना है। अगर अगर आपका बेडरूम है, तो बेडरूम में 2 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। स्टेयरकेस और लॉबी में आपको 3 या 4 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। सो एनरोल इन माय ड्राइंग रीडिंग का कोर्स, वहाँ पे हमने ये सारी चीज
आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फाइन। सर आपके कोर्स बहुत कुछ एडवांस सीख रहा हूँ, जो कम साइट जो कम साइट चला होता तो आपका क्लासेस याद आती है क्यों कर, मैं समझा नहीं। व्हाट इज दैट? व्हाट सीख रहा हूँ जो काम कम साइट चला होता तो आपका क्लासेस याद आती है कि क्यों कर रहे हैं। ओके ओके, आपको हाँ, दैट इज व्हाट आई टेल। तो आपको जब वो चीजें समझ में आते हैं ना, तभी आप डिसीजन ले पाते हो साइट पे एंड ऑल, ठीक है। फाइन। ओके। 5+ year experience, what good salary I can expect? You ask this question yourself. You have a 5 year of experience, you ask yourself what salary you are capable of taking. You ask yourself, if somebody is ready to pay 1 lakh rupees salary, will you go and do that? If somebody is ready to pay you 1.5 lakh ka salary, whether you are ready to go and take it? If somebody is offering you 15,000 ka salary, will you take that? So when you ask this question yourself, no, you will find answer. Why? Because if somebody is paying you 15,000, you will tell 5 year of experience with the kind of knowledge I have, 15,000 is nothing. But if somebody is offering you a 1 lakh rupee ka salary, then definitely ask yourself whether you are able to match the level of expectation. Because if somebody is paying you 1 lakh rupee ka salary, is expecting something more from you, and whatever is expecting fear of the qualification or fear of the skills you may not be having. Correct? No. So you ask yourself what is the right salary for you. That's the good thing that you can come to a conclusion with 5 year of experience, because it depends what knowledge you have. No, there are people with 5 year of experience who don't know anything. There are people with only 2 year of experience who has a knowledge of 5 year guy. So depends on that. Like, you ask yourself what is the salary you can expect. Again, you just asked what salary you can expect, but I want to know which field you're working. If you're working in a site execution job, and if you have been working in a good company with 5 year, you can expect a salary of 50 to 75,000 rupees in a site wala job. If you're working as a structural engineer with a mtech qualification and you have complete 5 year of structural design ka experience, definitely you can expect a salary in the range of 75 75 to 90. I would again I would suggest, again depends what is exposure you have. Again, if you have 5 year of experience in the project planning and all, you can expect around 60 to 80, 85, 90,000 salary. 60 to 85 you can expect with 5 year of experience. Again, I'm speaking of good companies, not these chota mota companies and all. Okay, chota mota companies, they will pay you 30, 40 only, not more than that. Sir, how is a career in project coordinator role in civil engineering? Is it? Yeah, project coordinator is good. It is good, but usually project coordinator you don't get in all the companies. People those who have done MTech from good NIT, IITs, and all those things, they get these positions usually. But project coordinator is also good job. You can do it, not a problem. सर दुबई जॉब वर्सेस इंडिया में जॉब कहाँ बेहतर है वर्क? या दुबई में ही बेस्ट है। द रीजन सी, दुबई में एंड ऑल देर आर स्ट्रिक्ट रूल्स। 8 घंटे का ड्यूटी मतलब 8 घंटे का ही ड्यूटी है, ठीक है ना। एंड वहाँ पे मेथोडोलॉजीज देखो ना, कंस्ट्रक्शन का मेथोडोलॉजीज देखो, इज अ वेरी गुड मेथोडोलॉजीज हैपनिंग। वहाँ पे क्वालिटी इज गुड, हर एक चीज अच्छा है। इंडिया में यू नो हाउ द वर्क हैपन्स, सिर्फ फिर सिर्फ लिखते हैं कि 9 to 6 का वर्क होता है, तुम रात के 10, 11, 12 बजे तक काम करते हो, और भी कितना 12, 13, 14 घंटे का काम होता है। इन दुबई एंड ऑल इट्स 8 hours मीन्स 8 hours का ड्यूटी, 10 मतलब 10 hours का ड्यूटी होगा। एंड आप प्रोजेक्ट्स भी देखो ना, दुबई में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट ऑल डिपेंड्स, ऑफ कोर्स दे आर बेटर देन दिस। इसीलिए तो आप दुबई में जितने भी इंजीनियर्स देखते हो, कहाँ से देखते हो? इंडिया वाले ही देखते हो ना, केरला, बैंगलोर, आई मीन एवरी, स्पेशली केरला वाले बहुत लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। डेफिनेटली दैट इज बेटर यार। उसके बाद और क्या क्वेश्चन है? ओके सर, आप फाइन सर, फाइन सर। शुड आई गो फॉर अ BRO JE और कंटिन्यू प्राइवेट जॉब फॉर 30K इन मेट्रो विद फैमिली एज आई बोथ ऑफर इन हैंड? व्हाट इज दैट BRO JE एंड व्हाट सैलरी दे आर गेटिंग, यू आर गेटिंग? सर गेट देना है, कैसा है? हाँ दे दो यार गेट। सिर्फ देखो, सिर्फ गेट देने में कुछ नहीं होने वाला है। इफ यू फील यू आर टेकन अ गुड कोचिंग, इफ यू फील कि आप अच्छे मार्क्स ला के कोई PSU में जा सकते हो, या अच्छे मार्क्स से कोई अगर आपका एमटेक करने का प्लान है, NIT IIT में जा सकते हो, तभी जाके गेट दे दो। फालतू 20-22 मार्क्स लाने से क्या होने वाला है? गेट में कुछ नहीं होने वाला है। तो डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। ओके। Yes sir, I need your suggestion, and if I can add, yeah, I'll add you in the WhatsApp group. You can WhatsApp me, I'll add you in the WhatsApp group. So how is the career in project coordinator? I told you
विदेश में सिविल इंजीनियरिंग क्या रोल होता है? अगेन देखो, विदेश में भी सेम वही चीज होता है यार, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेटर, बिम के जॉब्स, स्ट्रक्चर इंजीनियर के जॉब्स, क्यूए किसी का जॉब्स, जितने भी जॉब्स आपको इंडिया में मिलेगा सेम वहां पे मिलेगा, सेम जॉब्स। सर संडे भी हॉलीडे नहीं होता है, सिर्फ 5 बजे छुट्टी देते हैं, पूरा फ्रस्ट्रेशन। तो छोड़ दो, वैसे वाले जॉब छोड़ दो। देर आर गुड कंपनीज यार, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज से उसमें चले जाओ ना। सो अगर आप ऐसे वाले कंपनीज में काम कर रहे हो ना, जहाँ पे संडे को भी 5 बजे तक वो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली देर इज नो ग्रोथ इन दोज कंपनीज। समझ में आ रहा है ना? कंपनी में जब ग्रोथ ही नहीं है तो आपका ग्रोथ कहाँ से होने वाला है? तो ऐसे कंपनीज को छोड़ दो। पर अगेन देखो, मुझे बोलने के लिए इजी है कि छोड़ दो, फिर तुम छोड़ के क्या करोगे वो भी मैटर करेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सेविंग्स बना के रखना है, मे बी लाइक 25, 30, 40 हज़ार का सेविंग्स करके रखो। अब एक बार छोड़ोगे जॉब, तुरंत दूसरा जॉब नहीं मिलेगा। अगेन 2-3 महीने का टाइम चाहिए। उस 2-3 महीने में अपने खर्चे को निकालने के लिए तो पैसा चाहिए ना। तो ये सब प्लान करके आपको जॉब छोड़, पर ऐसे वाले भी जॉब्स में मत करो। बट अगेन आई वांट टू नो योर एज, आपका एज कितना है, वो सारी चीज मैटर करेगा। सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन गाइड यू। ठीक है यार, ठीक है। अरे इतना क्यों पूछ रहे हैं? विदेश में का बोल दिया है मैंने सर। एक और बात है, जो नॉलेज हमें पता होता है 15 के वालों को, और वही नॉलेज 33 को, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन सर? एक और बात है, जो नॉलेज हमें पता होता है 15 के वालों को, और वही नॉलेज 33 को, तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर? सिर्फ द डिफरेंस इज अबाउट द एक्सपीरियंस। समटाइम आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। व्हेन आई से एक्सपीरियंस, देखो नॉलेज मैटर करता है, नॉलेज, बट एक्सपीरियंस मतलब, मान लो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसी और को 4 साल का एक्सपीरियंस। जो 2 साल का गैप में, वो 2 साल के गैप में उसने बहुत कुछ देखा होगा। मान लो आपको आपको सिर्फ 3 प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, उस बंदे को लेटर से 6 प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है। तो जो एक्सपीरियंस ना वो भी मैटर करता है कभी भी, ठीक है? सो दैट इज वाई वो सैलरी थोड़ा ज्यादा वहाँ पे होता है। आपके कॉलेज में देखो, जो प्रिंसिपल होता है उसका एज कितना होता है? प्रिंसिपल का कभी भी, प्रिंसिपल का एज 40, 45, 50 होता है। वो सिर्फ क्वालिफिकेशन के ऊपर वो प्रिंसिपल नहीं बनता है ना। ऑफकोर्स उसके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए, पर अलॉन्ग विद पीएचडी, पीएचडी किया उसने उसने कितना रिसर्च पेपर किया वो भी मैटर करेगा, उसका एज भी मैटर करेगा। क्योंकि वो जो एज है ना, समझ में, वहां से आप बहुत कुछ सीख, इट्स नॉट ओनली मतलब टेक्निकल नॉलेज ना। मान लो आपके साइट में कुछ हो गया, साइट में मान लो कोई लेबर ऊपर से पड़ा मर गया, अब बताओ उस टाइम पे तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज काम आएगा क्या? टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आएगा। वहां पे डिपेंड करेगा तुम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। अगर आपके पास बहुत बढ़िया टेक्निकल नॉलेज है, पर आपने कभी लाइफ में एक लेबर को साइड पे गिरा हुआ नहीं देखा है, एंड गिरने के बाद उसको कैसे सही करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, अगर वो पता नहीं है, तो व्हाट यू विल डू? एक और बंदा है जिसको लेट्स से 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसने ऐसे 2-3 चीज को, ऐसे 2-3 केस को हैंडल किया है। तो अभी उसको पता है, अभी बंदा मरा है लेबर वहां पे, उसको कैसे हैंडल करना है वो भी मैटर करेगा ना। तो एक्सपीरियंस आपको वो सब सिखाता है। गेटिंग माई पॉइंट? एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकल नॉलेज, इट विल टीच यू एवरीथिंग। सही समझ में आ गया ना? सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। सेम विथ मी, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई हैव अराउंड 8 साल का एक्सपीरियंस। मैं पढ़ाता मैं हूँ, फिर गलतियाँ आप साइड पे करो उसको सही कैसे करना है वो भी करता हूँ। दूसरे लोग भी ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, कुछ लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस वो भी पढ़ाते हैं। आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस, तो मैं भी पढ़ाता हूँ। जब हम पढ़ाते, जब मैं बेंडिंग मोमेंट पढ़ाऊंगा, अगर मैं बताऊँ सिंपली सपोर्टेड बी में, तो पता है कि दोनों साइड सिंपली सपोर्टेड में बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा, WL² 8 होगा। वो भी वही पढ़ाने वाला, मैं भी यही पढ़ाने वाला हूँ। पर मेरे एक्सपीरियंस में अलग से क्या पढ़ूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली साइड से पढ़ाऊंगा, साइड पे उसको कैसे अप्लाई वो मैं पढ़ाऊंगा। हो सकता है वो बंदा नहीं पढ़ाएगा, तो एक्सपीरियंस से आएगा कुछ चीज, ठीक है? समझ में आ रहा? सेम विथ यू ऑल्सो। ठीक है सर, क्रिएट alumni ग्रुप फ्रॉम योर cohort so that others get to know about job offers as well as networking. I have a WhatsApp group, you can join that. See, when I say alumni group, few people message me, few people don't message me. Okay, again, it's not easy for networking and all. You can connect with people on the LinkedIn, that is better. I have a WhatsApp group. I can see you are thinking from networking point of view and all. If I make that group open to everyone, then few random message, few YouTube links, few nonsense message and all will come. So the main motive of the group will be lost. So that is why all these things will not work out. So the best way for networking is be active on LinkedIn and all. That is a better option. Okay.
हाँ, BRO is border road organization, then join that. So that is where you get lot of good exposure. आप कहाँ किससे बात करते हो? You are into the army लोगों के साथ, border road organization with the government of India and all. You coordinate with those people and all. Definitely that exposure is better. ठीक है? Family after some time you can come ना. तुम 22 साल 23 साल 24 साल की एज में क्या फैमिली है आपका? तो 3-4 साल मेहनत करो, फिर उसके बाद if you feel once you gain experience then come back. ओके चलो, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो पूछा तुमने, एक्सपीरियंस 15 के और 33 के, क्या नाम है? सौरभ चौधरी, हाँ ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है फाइन। सर जैसे इंडियन कोड है सिविल इंजीनियरिंग में काम करने के लिए, वैसे गल्फ में कौन से कहाँ कोड? गल्फ में स्पेशली दे यूज एक आई थिंक ACI कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड ACI कोड यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपका QA किसी के लिए उनका खुद का कोर्स होते हैं, जैसे सऊदी के लिए वो सऊदी के अलग सा कोर्स, सऊदी का अलग सा कोड दे प्रिपेयर मेथोडोलॉजीज एंड ऑल। बट यूजुअली आई थिंक दुबई में क्या होता है, स्पेशली दे रेफर ACI कोड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट, ACI का कोड कंक्रीट के लिए आई एम टेलिंग, ACI कोड इज व्हाट दे रेफर फॉर, ठीक है फाइन। हाउ टू अप्लाई फॉर गल्फ countries job through India? What's the path? So the path is, there are 2-3 path. One is references, your seniors, someone working there who can help you and get a job. This is one way of doing. सेकेंड वे इज दैट, बहुत सारे कंसल्टेंसीज होते हैं जो आपको जॉब दिला सकते हैं। इसमें फेक भी है, जेन्युइन भी है। अगर फेक है उसको देख के आपको अप्लाई करना है, जेन्युइन लोगों को कनेक्ट करके करना है। तीसरा चीज, इफ यू हैव गुड इंडियन नॉलेज, आई मीन इफ यू हैव गुड एक्सपोजर इन इंडिया, आपको 3 महीने का विजिट वीजा के लिए आप जा सकते हो। जाने से पहले पूरा रिसर्च करो, किस एरिया में जाना है, कहाँ पे जॉब है, ढूंढना है। 3 महीने जाओ, रहो और वहाँ पे जाके जॉब करो, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्टली वहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। क्योंकि मैं अभी आई हैव सीन मेनी वैकेंसीज इन दुबई एंड ऑल, पर द प्रॉब्लम इज, दो लोग दे एक्सपेक्ट कि तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परसों इंटरव्यू तो आज आप यहाँ से इंडिया से दुबई नहीं निकलने वाले इंटरव्यू के लिए, दे विल नॉट एंटरटेन यू। सो दे वांट समवन हु इज ऑलरेडी देयर इन द दुबई। अगर आप 3-4 महीने वहाँ पे रहोगे ना, अच्छा नेटवर्किंग करोगे, बात करना आता है आपको, लोगों से कनेक्ट करना आता है, तो 3-4 महीने में ना कहीं आप जुगाड़ लगा के ना जॉब ले सकते हो वहाँ पे, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड नॉलेज, दैट्स इट। What are the minimum salary in Gulf if I have 5 years of experience as civil engineering? See, again, depends what kind of company you're applying. Uh, but you can expect a salary in the range of 5,000 dirhams to 7-8,000 dirhams. Again, depends. Yeah, depends. See, I have one of my student who's having around 2.5 year of experience, like almost 3 year of experience as a QA/QC engineer in Dubai. He's working in Shoba company. He's getting around 7,500 dirhams. But in your case, you may or may not get, because in his case, he was working for a company called Shoba in Bangalore. The same company is operating in Dubai. So the same company he got there. So that is why he is able to get 7,500 dirhams. I have seen many people with 3-4 years of experience also getting 5,000 dirhams in Dubai. So again, depends what company you're applying, what kind of knowledge you're bringing with you, what kind of skills you're bringing. All those things matter. Fine. ओके चल, एक 3-4 क्वेश्चन से विल टेक अप। ओके ठीक है। सर आपने अब अदर कंट्री में ट्राई किया था क्या? कहाँ पे गया वो, मैंने मिसल। साइट इंजीनियर का फ्यूचर में कौन से नए वर्क सीखने फ्यूचर में ज़रूरी है? साइट इंजीनियर को साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग, रीडिंग, एस्टिमेशन, BBS, BOQ, प्रोजेक्ट प्लानिंग, MS प्रोजेक्ट, प्राइमवेरा, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, बस ये सारी चीज़ आपको सीखना है। दिस आर द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ साइट इंजीनियर। फॉर्म वर्क के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए आपको। सर आपने मेंटेनेंस सिविल इंजीनियर वर्सेस क्वांटिटी सर्वे और सिविल, विच वन इज बेस्ट इन गल्फ? See, everything is best, yeah. Everything is best. There's nothing like this is best, that is best. Depends how you're going to perform. Depends what salary they're offering, what skill set you're bringing and all. Okay, everything is best. Sir, आपने other country में try किया था? No, I didn't try. See, in मेरे टाइम में we didn't have all these ideas and all यार, ठीक है। वी नेवर हैड, आपको एटलीस्ट आज कोई बंदा लाइव आके पढ़ा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, बहुत लोग है करियर मेंटरिंग। हमारे टाइम में वो कुछ भी नहीं था, ना हमें कोई आइडिया था, ना हमारे पास कोई विजन था, ठीक है। सो आई डेंट ट्राई फॉर एनी जॉब्स इन दुबई एंड ऑल, ठीक है। विदेश बिग प्लांट में सिविल इंजीनियर का क्या काम है? व्हाट इज दैट विदेश बिग प्लांट मतलब?
So how to get a job in Gulf countries to staying in India? What's the path for applying? I told you, no, that is the path. Seniors, references, consultancy. But other thing is, you should go there, stay for 3 to 4 months. You go for a visit visa, stay for 3 to 4 months. Chances will increase. You can get a job. सर लाइव आने से पहले ग्रुप में अपडेट कर दिया करो पहले. हाँ करेंगे. आज एक्चुअली मन नहीं था मेरे को आने का, बट आई थॉट कि चलो आई विल कम, नो प्रॉब्लम. अरे मेरे कोर्स में अगर आपने एनरोल किया फिर लाइव सब आने की जरूरत नहीं है. ये बस दूसरे लोगों के लिए होता है. आप लोगों को जो जो पढ़ाने मैंने पढ़ा के रखा है, डोंट वरी. ये जब मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, इनका डाउट्स जो है मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है, फाइन. सर मैं बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, तो क्या करूँ अच्छी जॉब के लिए? कुछ नहीं करना है. अगेन आई रिपीट, मेरा ऐप डाउनलोड करो सिविल ब्रेन्स का, कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर का कोर्स ले लो. लेने के बाद मेरे को मैसेज करो, बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या सीखना है, कहाँ पे जाना है. बस अगले तुम्हारे 2-3 साल यू जस्ट सरेंडर अंडर मी. 3 साल मुझे दे दो, आई मेक यू बेटर सिविल इंजीनियर. और कुछ पैसा लेके आ जाओ, क्योंकि फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाने वाला है. तो मेरे कोर्स में आपको लगभग 8,500 लगेगा. इन्वेस्ट करो, 4 महीने का टाइम दे दो. उसके बाद आगे आप बताओ आपको किस पाथ में जाना है. स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, प्लानिंग इंजीनियर बनना है, बिम इंजीनियर बना दो. फिर दूसरे और अच्छे कोर्सेज सजेस्ट करूंगा. तीसरे साल से इंटर्नशिप्स करो, 4 साल के बाद कंपनी में ज्वाइन करो. फिनिश, और कुछ नहीं करना है. सर हमको एक अच्छे कॉलेज में आईटी ब्रांच मिल रहा था, लेकिन काउंसलिंग के गलती से की वजह से सिविल लेना पड़ा. क्या आगे कोई स्कोप है? सी अगेन, there is no comparison of IT with सिविल वाला पीपल. डेफिनेटली आईटी वाले लोगों को ज्यादा सैलरी मिलता है कंपेयर टू सिविल वाले लोग. अगर आपको सिविल में इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करो. नॉट ओनली सिविल, आईटी में भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करो. अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप फालतू में करोगे, आप पछताओगे फिर 3-4 साल के बाद. तो छोड़ दो. 1 साल अगर गए आपका वेस्ट भी हो जाएगा, चलेगा, डोंट वरी. जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी में करो. आईटी में इंटरेस्ट है तो दोबारा आईटी में ही करो, एंड डोंट कम टू सिविल. सिविल में इंटरेस्ट है तो कंटिन्यू करो. सिविल में इंटरेस्ट नहीं है, आईटी में भी इंटरेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, ऑटोमेशन, व्हाट इज द ऑटोमेशन होता है ना, ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है, डेटा एनालिस्ट में, डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करो. क्योंकि आगे जाके इट्स इंटरेस्ट विच विल ड्राइव यू, नॉट एनी ब्रांचेस एंड ऑल. सर हाउ टू गेट जॉब्स हो गया. सर हमको एक अच्छे कॉलेज में आईटी, हाँ मैंने बोल दिया, अंकुश कुमार मैंने बोल दिया, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें करो यार. ठीक है. सिविल में है, बट सिविल में बहुत मेहनत लगेगा आपको, और सही दिशा में अगर आप जाओगे यू कैन गो टू बेटर पोजीशन. बट दिस इज नेवर अ कंपैरिजन ऑफ अ सिविल इंजीनियर और अ स्ट्रक्चर इंजीनियर्स विद द आईटी पीपल. स्ट्रक्चर इंजीनियर्स बीम एंड ऑल इट्स गुड, बट सिविल में थोड़ा साइट वाले जॉब में बहुत टाइम लग जाएगा. Sir, I have 2 year experience and now I'm handling a railway station building project, but I feel fear to take decision. Main is डर को कैसे कम करें. Again, see the डर क्यों आता है कि आपको अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं, अगर आपको अगला सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं तो तभी आपको डर लगता है. सो उसको निकालने का तरीका है टू अपग्रेड योर नॉलेज. अगेन आई विल टेल, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, एक बार कोर्स को चेक करो. आप मेरे कोर्स का एक बार कंटेंट चेक करो, और कितना नॉलेज आपके पास हो एक बार आप देखो. इफ यू फील मेरे कोर्स में बहुत कुछ है जो आपको अभी भी पता नहीं, डेफिनेटली उसमें एनरोल करके नॉलेज गेन करो. वंस से हैव नॉलेज ना, वो डर सब आपका चला जाए. डर इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी वो काम नहीं किया. दूसरा चीज, मान लो आपने काम तो किया, उसका सही कॉन्सेप्ट पता नहीं कि कैसे करना है. सो इन माई कोर्स आई कवर ऑल दोस थिंग्स, बट मेरा कोर्स सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर है. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. ठीक है, फाइन. सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहिए? से अगेन इट्स योर डिसीजन ना. इट्स समथिंग लाइक, सर लेट्स से अगर मैं वेज खाता हूँ, सर मेरे को पनीर खाना है या मशरूम खाना है. यार तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है वो खाओगे ना तुम. एक को पनीर अच्छा लगता है, एक को मशरूम अच्छा लगता है, एक को गोभी अच्छा लगता है. तो हाउ कैन आई डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है? समझ में आ रहा है ना. तो यू फर्स्ट डिसाइड कि आप किस में जाए. अगर गवर्नमेंट जाए तो गवर्नमेंट में क्यों जाना है. अगर गवर्नमेंट जाना है तो आप बताओ कि आप उतना पढ़ाई कर सकते हो क्या? 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो क्या? क्या आप अगले 2 से 3 साल बहुत मेहनत कर सकते हो क्या? वो देखो. समझ में आ रहा है ना. अगर इफ यू फील नहीं सर मैं कर सकता हूँ मेहनत, मेरे को इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट. बट इफ यू टेलिंग नहीं सर मेरे को मेहनत नहीं है, घर वाले मेरे को फोर्स कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, मेरे को खुद पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, देन गो फॉर अ प्राइवेट. सिंपल डिसीजन यू कैन टेक.
Sir, can you suggest anything about offshore? Offshore, I have no idea, but few of my friends, I mean, one of my friend even now, we did all MTech in structure engineering. Soon after his MTech, he started working as a structure engineering in offshore structures. So he is still working in that project. Offshore, there are very few companies in India. One is ONGC will do offshore projects, and there is another two companies. I don't know the name. So if you want any information regarding that, you can WhatsApp me 8095128107. I can connect to that guy and ask you if you require any information. But I don't have any exposure on the offshore projects. Sir, currently, what is that? Okay, currently I'm pursuing MTech in okay, you're doing MTech in Marine and offshore from NITK Surathkal. Until last year, there was almost 80% placement. This time the placement has decreased. So what can you suggest? Yeah, that's what. You just WhatsApp me. See, NIT Surathkal, you get good placement from there. Okay, there are good faculties and all. You don't have to worry. But if you want any help from my side, I can help you connect with one of my friend who is working in the offshore, or even he can help you connect with someone who is already, because since they are in the same company, definitely they will have a good contact. You WhatsApp me on the number. I can help you to connect with those people. I can do that from my side, no problem. So starting salary of civil in Delhi NCR, see, 20 to 25 is what you can expect anywhere. Okay, बट देर आर फ्यू कंपनीज जो आपको 15 16 17 18 हज़ार भी प्रोवाइड करते हैं सैलरी. अगर वो कैंपस प्लेसमेंट से आपका सिलेक्शन होता है तभी जाके आपको 30 35 40 का सैलरी मिलता है. ऑफ कैंपस में लोग आपको 20 से 25 हज़ार की सैलरी देने वाले हैं. कुछ जगह पे 28 भी दिया जाता है. भाई, मेरा 2018 पास आउट हूँ सिविल आईआईटी से. व्हाट इज दैट सिविल आईआईटी मतलब क्या है? ओके, एंड आई हैव माय ओन कंपनी named Fortunate Construction which make layout 3D designing. I have complete 100 plus project. I have my own software. ठीक है, अभी क्या करना है? तो अभी क्या करना है उसमें? मतलब आप आपको कोई प्रोजेक्ट्स चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए मेरे से? सो व्हाट यू वांट? सर, स्टेयरकेस में हम लैपिंग नहीं देते, इन केस लेना होता है. लेकिन सेम वही कॉन्सेप्ट है. स्टार्टिंग आपका दोनों सपोर्ट के पास आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा तो वहां पे लैपिंग मत करना, तो सेंटर पे लैपिंग कर दीजिए. ठीक है. ठीक है. ऐड आ रहा है क्या? अरे ऐड नहीं यार, मैंने ऐड नहीं चलाया आज. ऐड को बंद करके रखा है मैंने. उसका ऐड है क्या? भाई मेरा 2000 पास आउट है. फॉर्चून, नेम्ड फॉर्चून, फॉर्चूनेट कंस्ट्रक्शन. हाँ ठीक है यार, ठीक है, आपका कंपनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो अगर हमें कुछ प्रोजेक्ट्स चाहिए और हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आई विल कांटेक्ट यू. ओके, नो प्रॉब्लम. सर हम टू टू सर हम 2 से 3 ईयर प्राइवेट में जॉब करने के बाद खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी. हाँ, खुद का कंस्ट्रक्शन आप ओपन. हाँ ठीक है, खुद का कंस्ट्रक्शन ओपन कर सकते हो, पर डिपेंड करेगा उन 2 3 साल में आप क्या काम करोगे. अगर आप बहुत बड़े बड़े कंपनी में काम करके आओगे तो खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. अगर आप छोटे मोटे कंसल्टेंसी में काम करोगे जो घर का प्लान भी बनाते हैं, 3D एलिवेशन बनाते हैं, साइट विजिट्स कराते हैं, बीओक्यू बनाते हैं, एस्टिमेशन बनाएगा, तो वैसे वाले में आप 2 3 साल काम करोगे, 10 15 प्रोजेक्ट भी हैंडल करोगे, तीसरे साल से आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो. बता रहा हूँ कि बहुत स्कोप है. अगर आप अगर ट्रेडिशनल वे फॉलो करोगे तो मुश्किल है आगे जाना. पर भी यूनिक इनमें होल बैच इवन मैं और कॉलेग सोचते हैं कि कैसा ये यहाँ तक पहुँच. हाँ, वेरी गुड. दैट्स व्हाट सही है. मतलब देखो, अगर आपको करने का इंटेंशन है आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. सो दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू टेल फॉर्चुनेट प्रेप. ठीक है. इनिशियल लेवल पे कैसे जॉब सर्च करें, नौकरी लिंक्डइन किसी जगह पे भी रिस्पांस नहीं आ रहा है. ठीक है, नहीं आएगा. आप कल कल एक वीडियो आएगा मेरे चैनल पे. ठीक है, कल एक वीडियो आएगा यूट्यूब चैनल पे. उसमें मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है, पूरा 30 मिनट का वीडियो कि जॉब कैसे अप्लाई करना है, लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, और ये सब 3 4 महीने का होता है. तुम अगर सोच रहे हो कि मैं 10 दिन अप्लाई करूंगा, 11th डे मेरे को कोई रिस्पॉन्स आएगा, नहीं आएगा. जॉब अप्लाई करना इटसेल्फ इज अ जॉब. तो इसको मिनिमम 3 4 महीने का प्रोसेस है, तब जाके कुछ होने वाला है. ठीक है. सो कल वीडियो आएगा मेरा, उसको आप देखो, वहां से पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. उसके अलावा और भी कुछ है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी. सर, आई हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर.
3D design software means Google SketchUp, 3ds Max, Revit and all. Okay, can I got projects from your side? See, uh, you can WhatsApp me and keep, just in case if any student come to me, or if I have any projects, or if I get any freelancing projects, I can suggest you, not a problem. Okay, see, instead of depending on me, you open your YouTube channel, try to upload the videos there. Maybe you can start teaching Google SketchUp, you can start teaching 3ds Max, you can start teaching how to prepare a plan and all. You're getting my point, no? So try to apply that, try to open your YouTube channel, try to create one Instagram channel, try to upload the videos, so you get people from there. You're getting my point, no? If you depend on me, whenever I get, I'll tell you, no? But if you do something on your own, definitely people will come to you. Okay, if I get, definitely I'll update you, but you do it on your own. Open a YouTube channel. If you want some help in opening a YouTube channel, link Instagram, reach out to me, I'll help you out how to create a YouTube channel, how to make a videos, how to upload it, how to do a marketing and all. I'll help you, no problem. You start to teach, fine, no problem. हाँ यार, वो आप वेट करो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, कल मेरा वीडियो आएगा, उसको देखो, कहीं पे एंट्री नहीं मिलेगा, ऐसा एंट्री डायरेक्टली नहीं भी मिलता है, तो थोड़ा वेट करो, कल वीडियो देख लो। उसके बाद मैंने नंबर दिया है 8095128107। उसके बाद आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, उसके बाद आई चेक इट आउट। ठीक है, फाइन। आई एम वर्किंग a company as a fresher in position of design and estimated engineer. Software is ApplyCAD, 𝗏𝗡𝗏. Any future scope? This is the first time I'm listening to the name of this software. I don't have an idea. आर्किटेक्ट रूपेश रांगे इज गुड, इस कोर्सेज आर गुड। मेरे दो तीन तीन चार स्टूडेंट को मैंने उनको कोर्स सजेस्ट किया है। देखो यार, कोई भी बंदा कैसा है, आप उनके कुछ वीडियोस देखोगे पता चलेगा। अब मैं कैसा हूँ, मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा ना। मान लो मैं बहुत अपने कोर्स के बारे में बता दूंगा, अगर मेरा कोर्स ही अच्छा नहीं है तो आपको पता चलेगा मेरे वीडियोस से ना, सिंपल सी बात है। कमिंग टू द रूपेश, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस, इज आर्किटेक्ट फ्रॉम नागपुर। तो उसका यूट्यूब चैनल में रोज बंदा लाइव आता है, लाइव पढ़ाता है, तो देखो, एक बार आपको देखने के बाद पता तो चलेगा ना कि बंदा कैसा है। जितना मैंने वेरीफाई किया है, ही इज गुड, वो अच्छा सिखाता भी है, इट टेक्स लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। अदर देन रूपेश, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर प्रॉब्लम क्या है, पूरा लोग आधा पढ़ा के चले जाएंगे। वैसे आधा पढ़ाते हो, आपको क्या बनना है? आपको एक अच्छे से प्लान बनाने के लिए सीखना है। लोग आपको ऑटो कैड सिखाते हैं, ऑटो कैड सीखने से आप प्लान नहीं बना सकते हो। ऑटोकैड एक टूल है, पर प्लान बनाने के लिए प्लॉट का डायमेंशन कैसे लेना है, वास्तु के हिसाब से प्लान कैसे बनाना है, बिल्डिंग बाइलॉस क्या है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। पर बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन ऑफलाइन में सब क्या करते हैं, डायरेक्टली बनाए हुआ प्लान, नक्शा है, तुमको बनाने के लिए सिखाएंगे। पर रूम का साइज कैसा आएगा, कल मान लो वास्तु के हिसाब से प्लान कैसे बिठाना है, वो सीखना है ना। तो ये बंदा आर्किटेक्ट है रूपेश, नहीं वो पढ़ाते, तो वो सीख लो ना। समझ में आपको चाहिए तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट है। और वो एक और बंदा है ना, उसका नाम क्या, वर्मा कुछ है, आई डोंट नो इस नेम, कुछ वर्मा है। ये भी ऑटो कैड का कोर्स कराते हैं। आर्किटेक्चर ओपिनियन के नाम से एक और बंदा है, वो भी ऑटो कैड का कोर्स कराते हैं। अब ये सिविल इंजीनियर दीपक कुमार जो सर है, उनके भी ऑटो कैड के कोर्सेज है। But they all are not architects. They all are not interior designers. There's a difference between learning a course from an architect, interior designer, and from someone who is practicing it. So definitely this course is better. एक बार आप verify कर लीजिए, ठीक है? से क्यूए किसी कोर्स इज ऑल्सो गुड, आपको बाहर वाले कंट्रीज में आपको अच्छा स्कोप है। इन माई कोर्स ऑल्सो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करके रखा है, सो दैट कैन हेल्प यू टू क्लियर द इंटरव्यू, स्पेशली फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड बाहर वाले कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है, उनका ओन मेथोडोलॉजीज होता है, तो वो थोड़ा आपको कुछ अलग लोगों से सीखना पड़ेगा। इंडिया में आपको क्यूए किसी का काम करना है तो माई कोर्स इज बेटर, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। बाहर वाले कंट्रीज में भी वो अच्छा ही है, पर बाहर वाले कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है, उनका मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपको बाहर वाले कंट्री का ही में जाने, आई थिंक यूट्यूब में दो तीन और लोग हैं जो दुबई में काम करते हैं, उनके पास भी क्यूए किसी का कोर्स है। आप मेरे कोर्स करने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा उनके कोर्स भी कर लीजिए, क्योंकि वो लोग दुबई में काम कर रहे हैं। तो दुबई का जो मेथोडोलॉजी है, कुछ लोग दुबई में है, कुछ लोग सऊदी में है। तो सऊदी का जो मेथोडोलॉजी है वो थोड़ा अलग है, उनका चेकलिस्ट अलग है। तो डेफिनेटली वो बंदा और भी थोड़ा आपको बेटर गाइड कर सकता है। पर एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस थोड़ा चीज आप वहां से एक्स्ट्रा सीख सकते हो।
हाँ दीपक वर्मा, एग्जैक्टली दीपक वर्मा का भी कोर्स है, आर्किटेक्चर ओपिनियन बंदे का भी कोर्स है, पीटीएस कैड एक्सपर्ट का भी कोर्स है, मेरे पास भी कोर्स है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक ही प्रोजेक्ट पे करवाया मैंने, तो मुझे पता है ना एक प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होने वाला आपका, सिर्फ मैं पैसा बना लूंगा आपका उसका यूज, इसलिए मैं उसको प्रमोट भी नहीं करता हूँ ऑटो कैड का कोर्स। तो एक बार रूपेश रंगे इज गुड, आप एक बार कंटेंट चेक करिए, इट्स अ गुड कोर्स यार। ठीक है, नहीं तो आप मेरे को फिर व्हाट्सअप करिए, मेरे से मैं आपसे बात करूंगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा, नो प्रॉब्लम। सर कंपनी मेरी छोटी कॉन्ट्रैक्टर की है, बट प्रोजेक्ट डीएलएफ था, वो पंचकुला लिया। हाँ हाँ तो ठीक है, डीएलएफ इज योर व्हाट इज दैट, वो क्या क्या लिखा है तुमने, बट प्रोजेक्ट डीएलएफ, अरे सही तो लिखो यार, बट प्रोजेक्ट डीएलएफ था, थे, थो, पंचकुला लिया है, क्या 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 लिखते हो तुम भाई? तुम ना, मेरा नंबर है 8095128107, व्हाट्सएप करो, मैं कॉल पे बात करूंगा। ठीक है, चलो डन आई थिंक यार, बस और कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप। हाँ 12 हो गया, 12 अनदर 4 मिनट्स आर देयर। हाँ क्यूए किसी का कोर्स मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं बता दूंगा। फर्स्ट मेरा कोर्स ले लो क्यूए किसी का, फिर उसके बाद उसका मैं बताऊंगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो यार। यार ऑटो कैड के लिए मुख्तार अंसरी सर भी बहुत अच्छे हैं, मैंने सीखा है ऑटो कैड बहुत ही, यार मुख्तार अंसरी सही है, पर प्रॉब्लम क्या है उसका, वो सब रेडीमेड प्लान्स बना के सिखाते हैं ना, मैंने मैंने भी देखा है उनका कोर्स, वो आपको सस्ते में मिल जाते हैं 200 300 रुपए में। उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो बनाए हुआ प्लान के ऊपर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, जब आप बनाए हुए प्लान के ऊपर प्रैक्टिस करते हो आपका थिंकिंग डेवलप नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? मान लो मैंने बोल दिया आपको, एक प्लॉट दे दिया 30x40 का प्लॉट दे दिया, ये सारे दे दिया, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट दिमाग लगाना होता है कि प्लान कैसे, एंट्रेंस कहाँ से रखना है, वास्तु के हिसाब से कहाँ पे रखना है, वो मैटर करेगा ना। आगे जब क्लाइंट आएगा, मान लो उस आगे वाले बंदे को वास्तु के बारे में नॉलेज है, उसको पता है कि एंट्रेंस ईस्ट में चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, बेडरूम साउथ वेस्ट में रखना है, मास्टर बेडरूम, गेस्ट बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में रखना है, किचन साउथ ईस्ट में रखना है, अगर साउथ ईस्ट में नहीं रख सकते नॉर्थ वेस्ट में रखना है। तो ये बेसिक चीज होती है वास्तु के हिसाब से। समझ में आया? तो इस हिसाब से फर्स्ट आप रफ लेआउट बनाओगे, रफ लेआउट बनाने के बाद तुम ऑटो कैड में बनाओगे। समझ, ऑटो कैड सीखने से तुम प्लान बनाना ही नहीं सीखोगे, प्लान बनाना सीखने के बाद तुम ऑटो कैड यूज करोगे। तो ये जितने भी चीजें हैं जो पढ़ाते हैं, ये सब प्लान बनाए हुआ के ऊपर पढ़ाते हैं ना, तो इससे तुम्हें थिंकिंग कहाँ पे डेवलप होगा? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सर आई हैव टेकन पीटीएस कैड एक्सपर्ट का मेगा इंटर्नशिप, डू आई नीड टू एनरोल रुपेश रंग के मास्टरी प्रोग्राम? you WhatsApp me. I don't know. Like, see, I don't know what you are learning there. I don't know what is your expectation. So मैं कैसे गाइड करूँ तुम्हें ना? तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, देखेंगे आपने क्या सीखा है। अगर वहां पे सीखा फिर इधर क्यों जाना है ना, वो भी प्रॉब्लम है ना। तो फर्स्ट देखो कि आपका आपके पास क्या मिसिंग है, वहां पे क्या है, एंड ऑल दिस थिंग, बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड। ठीक है, देखो ऐसे कोर्सेस में एनरोल करते रहने का भी कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप सोचेंगे कोर्सेस एनरोल करके मेरा नॉलेज बढ़ाऊंगा, नो। ऑटो कैड ये सब क्या है ना, ये सब प्रैक्टिस से आता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका थिंकिंग, आपका सॉफ्टवेयर चलाने का स्पीड बढ़ जाता है। कोर्सेस लेते लेते रहोगे तो प्रैक्टिस कब करोगे? समझ में आ रहा है ना? तो वो भी देखना पड़ेगा। सो यू जस्ट व्हाट्सएप मी यार, जब मैं फ्री रहूंगा ना, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, हाँ। अच्छा, मेरा कोर्स ले लिया ना तो नो प्रॉब्लम, फिर मैं उस बंदे का कोर्स बता दूंगा। ठीक है, मेरे को कल व्हाट्सएप करके रखिए, बेस्ड ऑन दैट आई विल सजेस्ट यू, नो प्रॉब्लम। सर डिजाइन एस्टिमेटर इंजीनियर, वो क्या होता है डिजाइन एस्टिमेटर इंजीनियर, मतलब क्या है? कैन अ फ्रेश ग्रेजुएट गेट अ जॉब इन सऊदी? सी यू कैन गेट अ जॉब अगेन, one is through reference through your seniors, second is through consultancy, third is you should go to Saudi, stay there for 2 3 months. I don't know what is a travel visa you get in Saudi, stay there, then you have to apply for a job. My course on Primavera is done by a faculty who's working in Saudi. So last month I spoke to him, he told that there are many jobs in Saudi, but they want person to be there in Saudi, they not take an interview through online and all. So you'll get a job, but you have to search for the company and all, that way you can get a job. सर क्यूए किसी सिविल में क्या क्या जरूरी है, मतलब सर क्यूए किसी में क्या क्या जरूरी है, सिविल में क्या क्या जरूरी है, लाइक उसमें उसका मतलब क्या है? सिविल क्यूए किसी, सर क्यूए किसी सिविल में क्या क्या जरूरी है?
ये सब कुछ जरूरी है, स्टार्टिंग से एंड तक, एक्सकवेशन से लेके हैंडिंग ओवर तक। एक्सकवेशन करोगे कि किस मेथोलॉजी को अडॉप्ट करना है, अगर 2 मीटर 3 मीटर से ज्यादा एक्सकवेशन करोगे उसके लिए क्या क्या आप बैरिकेड, हार्ड बैरिकेडिंग कहाँ पे लगाओगे, क्या क्या प्रिकॉशंस करोगे, वो मैटर करेगा। पीसीसी करोगे, सो पीसीसी करने के बाद आपको सही से कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। पीसीसी डालने के बाद क्या क्या चेक करोगे, लेवल कितना रहेगा, रिइंफोर्समेंट का क्वालिटी, जितना भी मटेरियल आपके साइट पे आएगा उसका पूरा टेस्टिंग करना, सब कुछ आपको किसी में करना होता है। In private civil engineering, 1 lakh salary, and government JE 70K salary, which life is, see, 1 lakh rupees in private job will take you 4 to 5 years. But if you clear any JE exam, initially you get 55. So definitely you get more salary in the JE in the initial stage. But in private, you can reach a salary of, let's say, 2.5 lakh and all. But with the JE and AE and all, reaching 2 lakh salary will take you another 15-20 years. Correct? No. But when you join a government job, you don't stick on to the salary. Whatever money you make through corruption, that is the actual money what you make. Correct? No. Apart from that, it's all up to you what kind of person you are. In private, you'll get to learn a lot of things and all. But in government, what happens, only on very few projects you get to learn. Rest all projects, if you're working in some maintenance and all, there is no learning only. It's totally up to you. If you want someone who is okay with salary, government holidays and all those things, you can apply for a government job. But if you're someone who is interested more towards, who is interested to upgrade your knowledge, start something on your own and all, private job is better. अगेन डॉक्यूमेंटेशन में एनसीआर रिपोर्ट बनाना, फिर आपको साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाना, फिर हर एक जितने भी मटेरियल्स आएंगे उसका क्वालिटी का रिपोर्ट बनाना, लैब टेस्टिंग करना, हर एक चीज आपको क्यूए में होता है. Life stability and social life, which is better in private or government? So in government you get everything, no? In government you get all the holidays. Okay. You get all the holidays, and also if you're working in good government in CPWD and all, so government will take care of you, take care everything. In private it's not like that, unless you're working for a very good company and you're working in a top position. Sir, I am studying BCom but I have interest in building construction, how to gain experience and knowledge? So for BCom and all, you get a supervisor ka position. If you want to learn, my course is there, enroll in that, I'll teach you. That's it, simple. Sir, अभी तो civil engineer private job like labor for fresher. अभी तो सी अगेन इट्स ऑल योर माइंडसेट. ठीक है, ये सब आपका माइंडसेट है. ठीक है, इट्स नथिंग लाइक लेबर एंड ऑल दोस थिंग्स. डिपेंड करेगा कैसे कंपनी में अप्लाई करोगे एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, अगर आपका थिंकिंग ऐसे है तो आपको ऐसे ही काम मिलेंगे जहाँ पे आप लेबर जैसे काम करने वाले हो. अगर आप अच्छे कंपनी में काम करोगे देन डेफिनेटली फील लाइक यू आर इंजीनियर. सो डिपेंड हाउ विच कंपनी आर वर्किंग एंड ऑल. साइट मैनेजर कैसे बने, तो साइट मैनेजर एक्सपीरियंस के थ्रू बनता है. 8 साल 9 साल 10 साल लगाने के बाद साइट मैनेजर बनते हैं. वहां तक पहुंचने के लिए साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीपीएस बीओ की प्रिपरेशन, पूरे साइट को हैंडल करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, सबका नॉलेज होना चाहिए. जब तक ये नॉलेज गेन करोगे 8-9 साल लगेगा, 10वीं साल में आप मैनेजर बन जाओगे. सिंपल. चलो ठीक है, that's it yaar. Thanks everyone for joining this live session. If you have any more doubts, I'll give my number, 8095128107. 12 hours job, no holiday, no social life, worst branch, civil engineer. So again, I'll tell one answer for that. It's all about your mindset. In go to my channel, I made 2 videos. Last 2 videos I made on my YouTube channel. Watch both the videos. If you want, I'll show it. So it's all about the mindset problem, nothing else. Because since you're not a bigger picture, since you're not seen other people, so all these are the kind of a comment that you make. That's the first thing. Second thing, whatever you tell is, I do agree that in civil engineering you have to work for 12, 13, 14 hours. There is all the time you have to be on the site, and I do agree. But it's not. You will not be doing all those things for a lifetime. Okay. So these 2 videos I made, this is my part one. Definitely watch it. After watching this, watch this particular thing. Here there are people like you only, those who come and comment like this. 12 hours, no holiday, no social life, worst branch and all. And listen to the entire video so that you get an understanding where you are and what other people in the industry are doing. Okay, fine. सैलरी कितना, व्हाट इज दैट सैलरी? अरे मेरे को पता नहीं सैलरी कितना है, आप व्हाट्सअप करिए फिर देखेंगे. सैलरी कितना मतलब साइट मैनेजर, अगर डिपेंड करेगा यार कौन से कंपनी में कर रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स.
Okay, important add-on knowledge or software for qa for qa no software is required. If you're good in ms excel, enough. There's no software, no. There's no software for qa only ms excel. Ms excel is not required. If you know how to do, if you know how to use ms word and powerpoint and ms excel is enough. There is no software and all in qa job. 100 में से 10 लोगों को अच्छी जॉब मिलती है, बाकी सब लेबर है। हाँ ठीक है, अगर लेबर है तो लेबर, व्हाट टू डू, नथिंग कैन बी डन। जिसका नसीब में जो लिखा है वो बनेगा, सिंपल। चलो फाइन, यार दैट्स इट। चलो गुड नाइट। एंड मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, उसको आप देख लीजिए। एंड इफ यू फील माय कंटेंट इज गुड, सब्सक्राइब करिए, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। If you want to upgrade your knowledge, I'll say my courses are far better than what people are offering on online and in offline training institute. Definitely मेरे कोर्स को एक बार चेक करिए। If you feel the content is good, definitely उसमें एनरोल करिए। वो आपको अच्छे नॉलेज देगा एंड ऑल्सो वो आपको एक लेवल तक लेके जाएगा, जो दूसरे लोग 3-4 साल लगाते हैं ना वहाँ पे जाने के लिए, उतना सीखने के लिए। आप ये सारी चीज मेरे कोर्स के थ्रू सीखोगे। इफ यू स्टिल वांट, मैं आपको एक बार रिव्यूज दिखा दूंगा। ठीक, रिव्यूज से क्या होगा, विल गेट एन आइडिया कि आप कैसे कोर्स लोगे एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, जस्ट आई क्विकली रन थ्रू माय कोर्स। देखो सर, मैंने बहुत से कोर्सेस लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन विद जबरदस्त, बेस्ट कोर्स टिल नाउ। आई हैव वेंट टू वेरियस कोर्सेस बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न, heavily recommended from my side. Somebody asked me कि सऊदी में जॉब मिलेगा. He is one of my student who got a job abroad in his first interview. He got, okay, he got a job in Saudi. Okay, then again these are the people, all those who have taken my course. Sir, your all courses are good. I'm purchased to drawing reading. In civil brains app, the construction manager mastery course is very good. Okay, so you can see I, okay, all this other reviews given by the students. ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। यू कैन चेक आउट ऑल दिस थिंग्स एंड यू डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। ठीक है, सिविल ब्रेन्स ऐप में आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, किसी प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ऑल, तो इस कोर्स में एनरोल करिए। लगभग 483 स्टूडेंट्स have एनरोल्ड एंड इसमें आपको अभी 20% का ऑफ मिलेगा। अभी 3-4 दिन के बाद फिर इसका कोर्स और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं नया कंटेंट ऐड करूंगा मैं कोर्स का प्राइस बढ़ा दूंगा। इसमें बहुत सारे अच्छे कंटेंट मैंने ऐड किया है। अगर आपको बड़ा कोर्स नहीं लेना है, स्टार्टिंग आप चाहिए तो फ्री कोर्स का ले लो, 7 डेज का वैलिडिटी है। देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। इफ यू फील माई टीचिंग इज गुड, डेफिनेटली एनरोल इन अ कंप्लीट कोर्स। ठीक है, thank you sir, I am watching your videos from 2 years. Yeah, good. So once you start watching my video for 2 years, whatever my knowledge is there, I have shared it with you. You learn and then you apply for better positions and all. Okay, चलो done. 13 people are there. Done. What is that? नहीं मतलब क्या है? TPA नहीं है, ठीक है। Can do preparation for government with private civil job. यू कैन डू, बट डिपेंड करेगा ना तुम्हारा टाइमिंग क्या है। अपने तुमने अभी खुद बोला कि 10, 12, 13, 14 घंटे का काम है, तो फिर आके कब तुम गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करोगे? नहीं होने वाला है। ठीक है, व्हेन आई से नहीं होने वाला है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स नॉट इजी ऑल्सो। ठीक है, चलो ओके, आई विल क्लोज इट। ठीक है, गुड नाइट एंड विल मीट सम अदर डे। ठीक है, चलो।